Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast. We're back again within a few days of the last podcast. But before we get into any discussions, we've got Suyash joining us again today, discussing India, England, as well as the next few games that are coming up in the World Cup, and then obviously the Australia New Zealand game as well. We didn't touch on that in the last podcast. But before we get into any of that, make sure you guys subscribe, make sure you leave a like rating, make sure you guys follow all of our social media pages for the latest news that's related to cricket as well as the World Cup. By Sara content aa raha hai. And thank you guys once again on the support. I mean, the last few podcasts we've been getting about 700 views on average, which is just insane. Blows my mind to think that a lot of people tune into us. Yeah, but thank you very much, and let's continue the support. Make sure we hit like 10, 15 likes on this podcast as well. Sayesh, welcome back. Har Pakistan ki haar ke baad, I try and get my friend along because it's always a fun conversation to sit here and roast him and memes banana मजा आता है. But आज तो भाई इंडिया ने जबरदस्त खेल लिया. हम लोगों ने I think we both beginning to talk about that. We both spoke about this last week, and we said कि क्या इंडिया वही replicate कर पाएगा bowling second. And today was kind of a good kind of test for us to realize कि भाई चलो top order थोड़ा बहुत collapse किया, where शर्मा के अलावा we had 3 early wickets and still we were able to get to a good score. Maybe it could have been better अगर थोड़ा sensibly और खेलते, एक दो rash shots नहीं खेलते. But at the end the bowlers just coming in handy. मोहम्मद शामी यार पता नहीं क्यों छुपा के रखा हुआ था उसको अभी तक हम लोगों ने. हाँ यार, मतलब लिटरली छिपा के ही रखा हुआ था. बट इवन बिफोर दैट जस्ट वांटेड टू से कि भाई लखनऊ में मैच था एंड आई मीन लखनऊ, सो वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दिस मैच. एंड काफी एक फेस्टिव एनवायरनमेंट था. एंड आई वाज जस्ट टेकिंग अ वॉक लाइक 30 minutes अगो, एंड मेरे घर के आगे देयर इज अ होटल एंड वहाँ पे कुछ इंग्लैंड फैंस थे एंड लाइक दे वर काइंड ऑफ. मैंने उनसे कहा कि भाई ब्रो टफ लक, एंड दे वर लाइक ब्रो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मैच, लेट्स काइंड ऑफ tell me what's there in Lucknow, where should I eat good food. So that is the kind of frustration the England fans have. But yeah, coming back to kind of India, very clinical performance yet again. We thought कि भाई अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो कैसा करेगी, एंड वी काइंड ऑफ, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट, वी स्ट्रगल्ड विद बैटिंग फर्स्ट. वी वर काइंड ऑफ exposed. The way we kind of lost wickets, and the way Kohli kind of got frustrated after two good saves, great fielding effort from England, and then he was kind of trapped. He got frustrated and like zero pe out ho gaya. And but then yeah, great comeback by Indian bowlers, and as you rightly said, I mean Mohammad Shami kind of in telling why, like making a statement कि भाई मुझे क्यों drop किया था तुमने, and I think now he'll be like the first player to be picked in the lineup in the coming games. Again, yeah, very exactly. Let's start with Shami. I think that's the main topic of today. Even though Sharma played well and there was a few other innings to recognize, but starting with Shami, I mean that spell, जो opening spell थी उसकी was so well done. I think what he was 2 wickets in 5 runs in almost 3.5 overs, 4 overs. भाई we both said कि भाई Shami is the guy to go, and मैंने ये भी कहा था कि भाई Shami with the new ball is very dangerous. Siraj is good towards the end. आप उसको पुरानी बॉल के साथ यूज कर सकते हो, बट शामी के साथ जो अटैकिंग पेस मिलती है विद द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल, वो सिराज के पास नहीं है. And that's where India was lacking, and the way Bumrah and Shami just picked out those wickets, because England were 30 for 1. I was like, यार ये कहीं sensibly अगर खेल लिया तो शायद ले जाएंगे game. But the way they brought it back and the way they played was just showed that they can bring it back as well. So credit where it goes by Shami. Again, 4 wickets nonetheless. I mean, और मुझे सरप्राइजिंग बात तो ये लगी थी कि दोनों जो हम लोग के पेसर्स थे, एक्चुअली तीनों पेसर्स वर डूइंग जनरली वेल ऑन अ पिच व्हिच इज meant to be played for spin. जब मैंने सुबह लाइनअप्स देखी, मैंने कहा यार 3 पेसर्स ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अश्विन टू प्ले टुडे. आई वाज लाइक चलो शामी का Hmm. 5 था लास्ट गेम, तो शामी खेलेगा, बुमराह खेलेगा, सिराज को रेस्ट करा के मे बी they'll have अश्विन प्ले. एंड क्या स्पिन पिच है और आपको क्या चाहिए इस सिचुएशन में. बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज. भाई बोल्ड मूव आई गेस कि भाई तीनों पेसर्स के साथ खेलना लखनऊ की पिच में. Absolutely, and I think like लखनऊ की पिच में एक चीज और होती है. आई थिंक जॉस बटलर काइंड ऑफ मिस द ट्रिक. आई डोंट नो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने मैचेस यहाँ पे देखे पिछले 4 में से, आई वेंट टू 2 मैचेस, तो क्लियरली दिख रहा है लाइट्स के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ चेज साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया वाज काइंड ऑफ बंडल्ड आउट, एंड द वे ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग राइट नाउ, क्लियरली यू कैन सी कि ऑस्ट्रेलिया वाज केपेबल ऑफ डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इवन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. But it was more down to कि वो they were playing under the lights and they kind of collapsed. तो I was very surprised कि बटलर ने क्यों वहाँ पे इंडिया को बैटिंग करने दी. Putting runs on the board on this pitch always you know
preferred choice. Shami ka yaar, if you remember, like we discussed in our earlier podcast as well, when I asked you कि भाई Shami, Bumrah or Siraj में if you have to pick two pacers, and there we kind of agreed कि भाई Shami को तो हम pick करेंगे ही करेंगे, and India kind of got swayed with the fact that सिराज ने एशिया कप के फाइनल में जो फाइफर ले लिया था, so we all kind of, so मैनेजमेंट की इसमें गलती नहीं है आई थिंक। एक दो मैच ही सिराज के खराब हुए, मे बी हु नोज नेक्स्ट मैच में सिराज भी फाइफर ले ले, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग दैट वी हैव, एंड वेरी वेरी हैप्पी नाउ है। मतलब मुझे एक जो लास्ट मैच तक जो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम एक नॉकआउट गेम में शायद कोलैप्स कर जाएं, कुछ हो जाए, वो मुझे आज कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ, मेरा कॉन्फिडेंस ये अब बढ़ रहा है कि हमारी टीम एज अ टीम खेल रही है, कि मतलब अगर बैट्समैन नहीं चले तो बॉलर्स वर एबल टू स्टेप अप टुडे एंड डू द जॉब। एंड आई नो कि इंग्लैंड यार, मतलब दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, मतलब लास्ट तीन मैच में दे हैव स्कोर्ड ऑल लाइक 170 150 एंड 130, इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट दे वर नॉट एबल टू स्कोर 200, सो ठीक है, आई एग्री कि इंग्लैंड वर मिनोज, बट still यार credit to the Indian bowlers. नहीं, I think any practice is good practice वाला situation है ना ये भाई। Obviously you'll play against teams who are not doing so well, so it's the right time to get started. I mean we've got South Africa के साथ भी game अभी बाकी है, so it just goes to show कि भाई South Africa who've been setting targets all along have been scoring 400, और कल वो पाकिस्तान के against they struggled with 287 290, and suddenly India same चेसिंग में इतने जबरदस्त से कर रहे थे कि we were winning by 6-7 wickets each game, and suddenly आज we were put behind in front of a wall and pinned down, or suddenly the bowler stepped up. So irrespective of कौन सी टीम है, it was good practice for us to at least feel the pressure as a bowler. पहली इनिंग्स में इतना प्रेशर नहीं होता होगा, चलो आपने 20 एक्स्ट्रा रन दे दिए अपनी स्पेल में, या ओवरऑल दे दिए 20-25 रन एक्स्ट्रा, एज अ बॉलर आपको लगता होगा चलो बैट्समैन संभाल लेंगे या कुछ हो जाएगा। एंड आई गेस जनरली बॉलिंग पे प्रेशर ज्यादा होता है सेकंड इनिंग्स में जब गेम क्लोज जाता है। इट्स ऑलवेज द बॉलर हु हैज टू डील विद द प्रेशर। बैटर तो अपना कंफर्टेबल होता है कि भाई एक जरा सी बॉल लेफ्ट से राइट हो गई एंड सडनली इज गॉन फॉर अ सिक्स इन द गेम्स ओवर वाला सिचुएशन होता है। बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू टू रोहित शर्मा। आई मीन 87 ऑफ 101, इट वाजंट एन इजी पिच टू बैट ऑन। तो आज की स्ट्राइक रेट्स देख के तो कोई फायदा नहीं होगा और कह के कि भाई चलो स्लो खेला इंडिया ने जो भी खेला। जनरली यू कुड टेल कि भाई अगेन एज यू सेड विराट कोहली वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। कितनी सारी बॉलें उससे लीव कर रहा था या स्ट्रगल कर रहा था टच करने में, बिकॉज ही न्यू कि भाई दिस बॉल कैन गो एनीवेयर। एंड इंग्लैंड की इनिंग्स में भी भाई जिस तरह से ये दोनों बॉलिंग करा रहे थे, एवरी बॉल दे वर टचिंग, जो या तो बॉटम एज लग के विकेट के पास जा रही थी या तो टॉप एज लग के फील्डर के पास जा रही थी, तो it was in easy conditions to bat on. So credit to Rohit Sharma as well. 87 ballistic innings, if you ask me, at 10 fours and 3 sixes. Just giving India the right start we need. वही था कि इंग्लैंड विकेट्स पिक कर रहे थे, बट दूसरी साइड में एक एग्रेशन दिखा रहा था रोहित शर्मा के भाई तुम विकेट्स देते रहो, मैं 6-7 की रन रेट से मारता रहूंगा, पहले 10 ओवर में रन रेट बिल्कुल बराबर कर दूंगा। एंड दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग एट द स्टार्ट। या सो इनिशियली उसने आई थिंक विली को मारा था 16 रन्स, जब ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, वेरी एग्रेसिव, बट देन वी लॉस्ट शुभमन गिल, देन वी लॉस्ट विराट कोहली, एंड अय्यर इज बिकमिंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम नाउ। उसकी वीकनेस एक्सपोज हो रही है, बट हमारे 3 विकेट जब गिर गए थे तो ही काइंड ऑफ स्लोड डाउन, ही बिल्ड द इनिंग अलोंग विद केएल राहुल, एंड मतलब बिल्ड स्लोड डाउन एज इन इतना भी स्लो नहीं, बट इट वाज अ ग्रेट कैप्टन नॉक आई वुड से। कहीं ना कहीं यार रोहित शर्मा को लखनऊ की कंडीशंस बहुत रास आती हैं, बिकॉज आई रिमेंबर आई वॉच द फर्स्ट गेम इन लखनऊ विच वाज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 गेम, उसमें उसने 100 मारा था। सो ही लव्स लखनऊ कंडीशंस, एंड आज देख के लग रहा था वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस, एंड ये मैंने देखा यार रोहित शर्मा का, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, एंड रोहित शर्मा आई हैव सीन इन टेस्ट मैचेस आल्सो, लास्ट ईयर की बात है, ही स्कोर्ड आई थिंक डबल सेंचुरी और अ सेंचुरी, आई कांट रिमेंबर, बट दैट दोस कंडीशंस वर आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इंग्लैंड ओनली आई थिंक। तो जहाँ पे टफ कंडीशंस होती हैं वहां पे रोहित शर्मा डज स्टैंड अप, ऑल्दो सब बोलते हैं कि भाई जहाँ स्विंग होती है ये वो ही हिज टेक्निक एंड ऑल, बट जो चीज रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई है ओवर द पास्ट 5 years, ही इज probably the only batsman in the world who can hit sixes at will, but at the same time has a very good defensive technique as well. So hats off to Rohit Sharma for that inning. I literally wanted कि भाई 100 मार दे, but was not to be. But like yeah, and देखते हैं आगे कैसा होता है। Great knock by Rohit Sharma. I think generally what I'm most excited about in terms of India's batting is the fact that जब कोई
नहीं चल रहा होता कोई और आके स्टेप अप कर जाता है, एंड वी सडनली सी कोहली प्ले सो वेल द लास्ट फ्यू इनिंग्स, एंड आज वो नहीं चला तो रोहित शर्मा वाज लाइक ठीक है आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रांटेड केएल राहुल ने पहले एक दो गेम में बहुत जबरदस्त खेला, फिर वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, तो समवेयर इट्स नाइस टू सी दीज गाइज ओवरलैपिंग ईच अदर। रोहित शर्मा फोर्थ है अभी रन्स में, ही इज गॉट व्हाट ऑलमोस्ट 400 रन्स। विराट कोहली इज ऑन 350 as well, and you've also got KL Rahul right up there with 250. So it just goes to show that this middle order, this top order is well built for India, but उसके surrounding थोड़ी सी weaknesses हैं, जैसे again हार्दिक पांड्या not being there, having to play Surya, that's affecting India as well। and आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभार वो स्ट्राइक दे जा रहा था बुमराह को, और पूरा बुमराह ओवर डिफेंसिव खेले जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, के ओवर खत्म करवाने थे, क्या करना भाई था। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे काम कर रखे हैं ना कि ट्रस्ट है लोगों का। बुमराह ने ब्रॉड को 35 मार रखा है। और एक इनिंग थी, वो याद है, एक टेस्ट मैच था जिसमें शामी और बुमराह ने हाँ हाँ, 90 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। तो वो इंडियन लॉर्ड्स में ही था ना, ट्रस्ट अ लॉट। वो हाँ तो हाँ लॉर्ड्स हाँ। में ही था, वो तो हाँ सीरियस लॉर्ड्स में विक्ट्री था। था। एंड एक्चुअली बुमराह ने एंड में 30 मतलब लास्ट के 20 50 20 एटलीस्ट इंडिया प्लेड 50 ओवर्स बिकॉज ऑफ बुमराह, एंड में वो हम्म टिका रहा। हम्म बट कमिंग बैक यार, मतलब मुझे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है। मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में थोड़ा सा बोला था कि मतलब श्रेयस अय्यर इज अ प्रॉब्लम बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ ही इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आई वांट, अब इंडिया यार 6 मैच जीत चुकी है, यहाँ से इंडिया हम्म क्वालिफाई तो करेगी सेमीफाइनल। आई वांट इंडिया टू एक्सपेरिमेंट विद, चलो ठीक है एक मैच और दे दो मे बी अय्यर को, बट आई वांट किशन टू कम देयर बिकॉज हम्म वो एक लेफ्ट हैंडर है। ही प्रूव्ड इट अगेंस्ट इन 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 टफ सिचुएशन अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप। सो आई वांट कि एक बार ईशान किशन को मौका दिया जाए। ही डिजर्व्स द अपॉर्चुनिटी। एंड क्लियर बहुत मतलब साफ दिख रहा है यार, मतलब। एंड मैं तारीफ यहाँ पे इंग्लैंड के टैक्टिक्स की करना चाहूंगा। जो वो बॉलिंग कराने आए, दे हैड डन देयर होमवर्क। मतलब शुभमन गिल को उन्होंने जिस तरह से बोल्ड मारा, क्लियरली दैट इज वन ऑफ हिज वीकनेसेस। फिर क्लियरली उन्होंने जो शॉर्ट बॉल डाली श्रेयस अय्यर को, विराट कोहली को उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया डॉट बॉल्स डाल डाल के। सो दे हैड अ वेरी गुड प्लान इन प्लेस, एंड श्रेयस अय्यर काइंड ऑफ फेल विक्टिम टू दैट प्लान। क्लियरली एक शॉर्ट बॉल, ही डिडंट न्यू व्हाट टू डू मैन। वो इतनी शॉर्ट नहीं थी कि तुम उस पर पुल मारो, एंड ही डिडंट न्यू व्हाट टू डू। मतलब उसको देख के ही लगता है कि शॉर्ट बॉल आई, उसका दिमाग फिर जाता है कि मैं करूं क्या। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब ये बहुत बार हो चुका है इसके साथ it's तो। not the first time. Every हम्म team, every fucking team in the world knows that now. And how contrary is it to your captain? भाई कैप्टन से सीखो। उसका क्लियर है, बाउंसर आई, शॉर्ट पिच आई, सिक्स सिक्स भाई वो सिक्स तो देखता भी नहीं, वो 99 तो आउट जैसे ऑफ लगता है आंखें 100। बंद करके बस ऐसे बैट स्विंग करता है वो कि आई थिंक जानी तो संजय है ही। मंजरेकर was telling on air कि, और someone, दिनेश कार्तिक was saying on air कि भाई रीनेम पुल शॉट टू रोहित शर्मा शॉट। Yeah, I mean, this तो guy is just mad. नहीं, I agree यार, श्रेयस अय्यर थोड़ा कंसर्निंग तो है, और स्पेशली मुझे ज्यादा कंसर्निंग तब से लगने लगा जब से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ है, बिकॉज हम्म, होता क्या है जब आपका वो भी एक विकेट चला जाता है ना, यू सडनली सी 70 for 4 या 80 for 4 सिचुएशन होती है, यू थिंक यार केएल बचा है और सूर्या बचा है भी, और आपके पास एंड ज्यादा जडेजा। होप नहीं रह जाती है। हाँ जडेजा चलो तो सर्टेन एक्सटेंट, बट वो नोइंग कि हार्दिक पांड्या है बाद में, यूर फाइन विथ श्रेयस प्लेइंग अ बिट ऑफ अ डेंजरस गेम या रिस्की गेम, बट जब वो होता नहीं है तो वो खेल नहीं पाता है ना। एग्री, आई थिंक अब टाइम आ गया कि भाई किशन को चांस दो, नॉट सेइंग कि भाई इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग, बट आपके पास एक विनिंग टीम है, बट यू आर आल्सो एबल टू एक्सपेरिमेंट। आज क्या 12 पॉइंट्स तो हो गए इंडिया के, तो आई थिंक वी टेक्निकली हैव क्वालिफाइड, नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम देयर। और भाई मतलब किस्मत थी आज, आई वुड से किस्मत थी, क्योंकि स्काई इज एब्सोल्यूट किस्मत। उसने हम्म जो 49 आज मारा है, दैट इज अ जेम ऑफ इनिंग। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया स्कोरिंग अ 180 वर्सेस इंडिया स्कोरिंग अ 230। तो बट स्काई इज नॉट, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हर आपके पॉडकास्ट पे बोलता हूँ, स्काई इज नॉट अ रिलायबल बैट्स। हम्म वो अगले मैच में ही जीरो पे आउट होगा, हो सकता है 100 भी मार सकता है, जीरो भी कर सकता है। ही इज अ मैक्सवेल ऑफ इंडिया, जैसा मैक्सवेल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो नहीं रुकेगा भाई, नहीं, वो आड़े तिरछे शॉट मारेगा चाहे जो कंडीशन। तो यू कांट लीव इट ऑन टू सूर्य कुमार। आज यू लेफ्ट इट ऑन टू हिम, ही स्कोर्ड, थैंक यू वेरी मच सूर्य कुमार यादव, बट आई डोंट वांट टू ट्रस्ट यू। आई वांट समवन एट नंबर 4 and 5 टू डू द वर्क। एग्जैक्टली, आई एग्री। आई थिंक जनरली यही एक ड्रॉबैक है बस इंडिया की परफॉर्मेंसेस से, बट उसके अलावा तो भाई परफेक्ट जा रहा है। 6 out of 6 सो फार फॉर इंडिया, 12 पॉइंट्स, जस्ट अ फ्यू मोर गेम्स अवे फ्रॉम दैट सेमीफाइनल। और जैसे जैसे वो दिन पास आते जा रहे हैं, जैसे जैसे नर्वसनेस और बढ़ती जाती है कि भाई टॉप ऑर्डर कोलैप्स मत करना, टॉप ऑर्डर कोलैप्स मत करना, फाइनल सेमीफाइनल में 200 का टारगेट सेट कर दो, लेकिन आराम से करो हार हुर के स्ट्रगल करके मत करो बस। एब्सोल्युटली। यही एक होप है। बट आई गेस कल का जो गेम हुआ
कहूंगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भाई क्या जबरदस्त गेम था टुवर्ड्स द एंड. हाईएस्ट एग्रीगेट, आई मीन व्हाट इज इट, 770 समथिंग स्कोर्ड between both the teams. So close, न्यूजीलैंड भाई रन आउट सिचुएशन. और मैं देखा था, मैंने कहा धोनी को किया था ना रन आउट 2019 में, धोनी को करा था रन आउट. अब आ गई वापस. भाई मैं तो चेल्सी की स्क्रीनिंग में बैठा था उस समय, चेल्सी का मैच भी हाँ. चल रहा था एंड इट वाज डाइंग मोमेंट्स, एंड मैंने भाई वो जिस तरह से पिट रही थी चेल्सी, मैंने कहा भाई बंद करो इस स्क्रीनिंग वीनिंग. मैंने खोल लिया फोन के सामने हॉटस्टार और मैं देख रहा हूँ अपना स्क्रीनिंग सामने चल रही है, मैं देख रहा हूँ अपना मैच भाई. मतलब what a match, man, what a match, what a fighting spirit from New Zealand, and what a shit show from Mitchell Stark. मतलब do हाँ. you expect that from Mitchell Stark? 19 रन चाहिए आखिरी ओवर में and bloody hell he is giving 5 wides. That, do you expect that from a veteran bowler? I Not at don't know, all, man. not at all. What was he doing there? But like the way, and just a shout out. I don't know if you have already made a video on this, but shout out to Travis Head, man. I knew this guy as Hmm. soon as he'll come, he'll change the Australian team, and that's I think we exactly what spoke he about did. this. Remember वो Yeah, जो साउथ अफ्रीका सीरीज रिव्यू किया था हम लोगों ने वर्ल्ड कप से काफी पहले, जब उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया डेंजरस है, वी सेड ट्रेविस हेड बीइंग इंजर्ड इज अ बिग ब्लो फॉर देम. और वो आज absolutely. देखने को मिल गया. द वे ही प्लेड, आई मीन 65 बॉलों 67 बॉलों में जो उसने सेंचुरी मारी है, इट्स इनक्रेडिबल. The way they were, I'm not sure, because India में it was an early start, so I'm not sure if you were able to see the initial part of the game, but the way Warner and Head were going, it gave me that Hayden Gilchrist वाली vibe यार. मतलब the way they used to hammer in every every bowler in the world. नहीं, तो वो जो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो स्टार्ट कह लो या पूरी इनिंग्स ही कह लो बैटिंग की, वो देख के लग रहा था कि भाई ये एक ऐसी टीम है जिसको पता है कि लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है, लेकिन दे हैव ट्रस्ट इन देमसेल्व्स. एंड दैट द सेइंग दैट वी हैव कि भाई यू कैन नेवर रूल आउट ऑस्ट्रेलिया इज वेरी मच ट्रू. और जो देखने को मिल रहा है, कहीं से लग रहा है कि भाई अगर सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट आ गई तो इट वोंट बी एन इजी गेम, इट वोंट बी द 199 जो चेन्नई में देखने को मिला था पहले गेम बिल्कुल नहीं. ट्रेविस हेड भाई, ट्रेविस हेड इज एवरीवन नोज, उसकी रेपुटेशन बन गई है पिछले 2 साल में. ही प्लेज स्पिन वेरी वेल. में. तो वो जो 200 बनाया था, दैट वाज विदाउट ट्रेविस हेड. ऑस्ट्रेलिया प्लस ट्रेविस हेड इज लाइक डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया. सो गजब है. एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इनिशियल में जो हम बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया एंड न्यूजीलैंड इज लाइक टॉप, वी गॉट स्वेड बाय द इनिशियल फिक्सचर्स एक्चुअली. हम्म. न्यूजीलैंड के फिक्सचर्स वर एक्सट्रीमली इजी. यस, उनका इंग्लैंड से था, बट see the condition of England now. You won't say that it was a difficult game. So New Zealand के games were very easy towards the beginning, whereas Australia के games they were like South Africa, India. तो वो अगर आप हारे हो तो you can't say कि मतलब you are out of the World Cup. And the attitude, that winning mentality that Australians have, they, as I already like said in some podcast कि ऑस्ट्रेलिया की विनिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया नेवर ब्लेम्स द कंडीशंस. दे नेवर ब्लेम द कंडीशंस, दे ऑलवेज फाइट बैक. और वही वो कर रहे हैं इस समय. दे लेट द लाइक देयर परफॉर्मेंस टू द टॉकिंग. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि मतलब दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा. वो रील बना रहे हैं, उनके प्लेयर बैठ के जय श्री राम कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग ऑल द टॉकिंग ऑन द पिच. एंड अभी ये जय श्री राम भारत माता की जय करते करते देखना वर्ल्ड कप ना उठा लें. आई होप ना उठाएं, बट दैट इज द एटीट्यूड दैट दे हैव, एंड दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू need from teams like England and Pakistan. एग्जैक्टली वो जो लैकिंग दिख रही थी वही वेरी 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 ऑब्वियस. आई मीन टॉप फोर वर्ल्ड कप की तो काइंड ऑफ डिसाइड हो ही गई है. इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. आई डोंट सी श्रीलंका गेटिंग एनीवेयर क्लोज because they've also got a game against India as well. The only other team which I guess by a miracle could be Pakistan, where you've come on this podcast and you said कि भाई कोई कैलकुलेशन लगाई है कहने के लिए कि भाई न्यूजीलैंड could also be out and Australia and Pakistan could qualify here. या सो मेरा देखो यार, एज आई सेड कि न्यूजीलैंड के फिक्सचर्स इनिशियल वाले इजी थे. सो नाउ दे हैव वेरी डिफिकल्ट फिक्सचर्स. आई थिंक नेक्स्ट फिक्सचर उनका साउथ अफ्रीका से है, देन पाकिस्तान से है, देन श्रीलंका से है. न्यूजीलैंड हैव ऑलरेडी लॉस्ट 2 मैचेस, राइट. पाकिस्तान के तो इट्स गिवन कि दे हैव लॉस्ट 4 मैचेस नाउ एंड हम्म. दे हैव टू विन ऑल द मैचेस, जिसमें से एक मैच न्यूजीलैंड से है. हम्म. सो नेक्स्ट मैच ऑफ न्यूजीलैंड, इफ दे काइंड ऑफ लूज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, so they'll be like 3 losses, हम्म. and then they'll have to face Pakistan, who are at 4 losses. So if Pakistan beat New Zealand, then by a convincing margin, then both of them will be at 4 losses. I am assuming कि श्रीलंका हम्म. या अफगानिस्तान में से कोई ना पहुंच, मतलब उस उतनी अच्छी कंडीशन पे पहुंच जाए. I am assuming. I don't think that will happen. Afghanistan, you can't. I mean, 9 out of 10 times you think that they'll be out of the World Cup. They'll lose 5 matches, and Sri Lanka क्या मैच तो इंडिया से ही है, आई so I मीन think एक they'll दोनों lose that. दोनों में से एक तो नॉकआउट हो ही जाएंगे क्योंकि when श्रीलंका एंड अफगानिस्तान प्ले ईच अदर, आई थिंक दैट वन इज प्लस श्रीलंका का मैच इंडिया से मोर. भी है हाँ, अभी. एग्जैक्टली. तो तो समवेयर तो श्रीलंका आई तो एम आउट ही है. हाँ, तो इफ इट्स बिटवीन जस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया,
तो मैं ये बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खुद के हाथ में है अब। हम्म। अब नहीं है, मतलब लाइक इफ बिग इफ इज दैट साउथ अफ्रीका बीट्स न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता बाहर होगी एंड साउथ अफ्रीका हम्म। मुझे नहीं लगता बाहर होगी। ओनली वीक लिंक इज न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान फैंस, यू स्टिल हैव होप, यू हैव गिवन अप बट आई एम टेलिंग यू, यू स्टिल हैव होप। न्यूजीलैंड इज नॉट लुकिंग द न्यूजीलैंड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू बी। They have their own weaknesses. Kane Williamson is out. Just cheer the hell out for South Africa. Suyash is trying I to say कि I Suyash is know trying you to say choked कि against chokers, but now you have to kind of support the chokers. सुयश बेसिकली कह रहा है कि भाई वानखेड़े स्टेडियम में तो वैसे भी पाकिस्तान अलाउड नहीं जाना, बट कोलकाता स्टेडियम में सेमीफाइनल में दिल दिल पाकिस्तान बच सकता है। बच सकता है, बिल्कुल कोलकाता में बच सकता है, एंड हम बजाएंगे और फिर भी हराएंगे आपको, हमको हराना है। भाई एंड आप देन विल फाइनल में हैव आओ अ सच में। and then we'll have Ali and me like face to face, and you'll try to mediate. मैं आराम से बैठूंगा, मैं एंजॉय करूंगा एंटरटेनमेंट। But नहीं yeah, भाई आई man, थिंक, like Pakistan will have it in their hands if South Africa beats New Zealand, and it'll make things very interesting in this World Cup. and I think that can happen भाई। पुणे में मैच है, दोनों हाई स्कोरिंग टीम्स हैं, दोनों के पास कैपेबिलिटीज है टू गो ऑफ, एंड दे हैव गुड बॉलिंग अटैक्स एज वेल, सो इट्स a good balanced ground for both batting and bowling conditions. And just one more thing, even if South Africa beats New Zealand, still Pakistan have a chance. Hmm. Pakistan beats New Zealand, New Zealand loses to Sri Lanka. Again, New Zealand will end up with 4 But I losses. think best bet यही होगी कि if New Zealand lose to South Africa, because I think that's a matchup which is a good, interesting one. Sri Lanka, तो I can Yeah, guess yeah. कि भाई New Zealand might have an upper hand, and so भाई instead पता of नहीं leaving यार, it जस्ट वन मोर थिंग यार, श्रीलंका की बात हो रही है तो ये एंजेलो मैथ्यूज, हाउ डिड ही कम बैक यार? आई थॉट ही इज रिटायर्ड एंड लाइक I नाउ don't ही have इज no बैक clue. विद अ बैंग एंड Like, एंड श्रीलंका के साथ हमेशा यही होता है। and he कोई ना कोई literally आके picked 3 wickets, and now Sri Lanka won, and like I think they are fifth or sixth in the table, right? they're actually fifth, right underneath Australia by 2 points. Could rain play a factor here as well? That's what I'm trying to think. Maybe wash out हो जाए एक दो गेम न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया किसी एक के, and that kind of helps Pakistan as well. That's यार what I'm. बारिश का माहौल तो है नहीं अभी इंडिया में कहीं, द वेन्यूज दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ बैंगलोर, Hmm. मुंबई और अहमदाबाद और कोलकाता में है। Hmm. तो आई डोंट थिंक बारिश बारिश का कोई ऐसा स्कोप है, बट या मैं अगर इफ यू आस्क मी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर मोस्टली देयर, हाँ अकॉर्डिंग टू मी इट ये विल तो बी एग्रीड है। बिटवीन I think न्यूजीलैंड it's all about now एंड figuring पाकिस्तान। out कौन सी टीम किसके खेल रही है और कौन से सेमीफाइनल में खेल हाँ रही है। That's just हाँ। the thing. But India, would they prefer to play in Eden Gardens, or would they prefer to play in Wankhede? We've seen very huge scores actually at Wankhede, both South Africa game or Australia game as well. We saw If incredibly high scoring games comparatively, where Kolkata में अभी इतने गेम्स हुए नहीं है तो इतना डेटा सेट नहीं है, बट कंपैरेटिवली वी ऑल नो कि स्पिन पिच बहुत जबरदस्त है कोलकाता की, तो that's somewhere where India, so maybe they want to look and say कि चलो second position आते हैं, that might benefit them, and say कि चलो बट भाई। बहुत स्ट्रेटेजिक सेमीफाइनल लोकेशंस रखी गई हैं, क्योंकि यार वानखेड़े इज द होम ग्राउंड फॉर रोहित शर्मा, Hmm. एंड ईडन गार्डन्स इज वेयर ही स्कोर 264। I think हाँ, you're right. सो बहुत स्ट्रेटेजिकली रखा है। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। just a conspiracy theory, guys. Don't say Jai Shah out. Pakistan fans, please don't trend अभी this से on नहीं, Twitter. अभी नहीं। पहले मैच होने दो। But I think if But I'm not yeah, wrong, second वाला है ना ईडन गार्डन्स में, हाँ, तो that's the one that हाँ। Pakistan will play if they qualify, तो आई पर्सनली वुड प्रेफर ईडन गार्डन्स, बिकॉज hmm. वानखेड़े में क्या है यार कि लेट्स से ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है, वानखेड़े का यार स्टेडियम इज सो स्मॉल कि आई हैव दोज वेरी बैड मेमोरीज फ्रॉम 2016 वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया टी वही ट्वेंटी मैं कहने जा मैच। रहा था। छोटा ग्राउंड कोई भी मारने लगता है, सो आई वुड प्रेफर ईडन गार्डन। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक हम लोग के पास ठीक है, हम लोग के पास थोड़ी पावर, फायर पावर है, बट इतनी नहीं है जितनी आई गेस न्यूजीलैंड, या नॉट नॉट न्यूजीलैंड बट स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया हैव इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। ट्रेविस हेड और मैक्सवेल जैसे जो मारते हैं और ऑन देयर गुड डेज, इफ दे स्टार्ट गोइंग, आई डोंट थिंक एनी इंडियन कैन मैच अप टू दैट। It'll still take Rohit Sharma, Virat Kohli, and these guys a few या balls, a few overs to try and get into the groove and maybe start hitting. But I would rather have India play in Eden Gardens, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो पता होगा मुझे कि चलो अगर बैटिंग अच्छी भी चली गई या बुरी भी चली गई, बॉलिंग अच्छी जाएगी, क्योंकि भाई you've got कुलदीप यादव who's gonna attack those stumps, and I think उसके पास तो काफी एक्सपीरियंस भी है ईडन गार्डन में खेलने के। He's a कोलकाता स्पिनर, right? यस यस So यस यस। it's kind of his kind of place to go, for everything to go right, and then Ashwin as well with the experience he has, आप उसको खिलाओ, and you've kind of got a good set of spinners who can play that game. जस्ट बिल्डिंग ऑन टू माई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अभी मुझे फिर दिमाग में आ रहा है कि आज सुयश पूरा एक्सपोज मोड में है। He's like, आज मुझे एक्सपोज करना है अभी सबको। अगले 2 मैच इंडिया के साउथ अफ्रीका वाला ईडन गार्डन्स में है,
एंड श्रीलंका वाला शायद वानखेड़े में है। हाँ तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंडिया के जो लास्ट के फिक्सचर्स हैं वो सेमीफाइनल वाले जगह पे रखे हैं ताकि इंडिया को प्रैक्टिस मिल जाए। अगेन अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बट कुड बी। एग्जैक्टली। और फिर नेदरलैंड्स के साथ आई थिंक एक रैंडम ही ग्राउंड में कहीं पे करा ग्राउंड वो, था, हाँ इट इज बेंगलुरु चिन्ना बेंगलुरु। स्वामी, चिन्ना स्वामी इज मच लाइक वानखेड़े। हाँ तो तो इट्स काइंड ऑफ जस्ट सेट अप परफेक्टली एंड फॉर चिन्ना इंडिया। स्वामी क्यों रखा है पता है? वो रखा था इन केस अगर इंडिया ने, मतलब अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बोल रहा हूँ, बट इसलिए रखा था कि कहीं अगर रन रेट पे बात आती है तो नेदरलैंड के साथ फिक्सचर रखा था, हम्म। चिन्ना स्वामी में रखा था कि भाई 500 मार देना अगर ओके देन रन रेट पे बात आती है। बट अगेन आई एम इन अ वेरी लाइक हैप्पी मोड एंड लाइक बिल्डिंग मैं ये कॉन्स्पिरेसी क्लिप थियरी करके सो। पूरा पोस्ट करूंगा हर जगह। ये परफेक्ट क्लिप मिल गई मुझे इस पॉडकास्ट की। But caveat is that it अरे is all in like conspiracy theory mode. Nothing एग्जैक्टली against any. It's a एग्जैक्टली। great World Cup, very competitive World Cup, and yeah, I hope एंड we see आई some थिंक good जनरली अगर teams. थोड़ा बायस्ड है भी या थोड़ी एडवांटेज दी भी जा रही है इंडिया को, दैट्स हाउ इट इज भाई। इंग्लैंड ने भी अपने अपनी फेवरेट ग्राउंड में खेला था। मोस्ट ऑफ गेम्स वर एट व्हाट्स इट कॉल्ड ओल्ड ट्रैफर्ड एंड बिल्कुल। कौन सा है जो उनका फोर्ट्रेस, आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड ही है उनका फोर्ट्रेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवल एजबास्टन। ओवल। हाँ एजबास्टन एजबैस्टन। जो उनका फोर्ट्रेस है। और सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया भाई, अपने उनके सारे गेम्स होम में थे, जबकि टूर्नामेंट हाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों बिल्कुल। में था। तो it happens, and I think that's why we've had the last 3 or 4 World Cups being won by home teams, क्योंकि conditions Yeah, were better on I that side. kind of just wanted to add fuel to fire हाँ to Pakistan fans' emotions. So, and I wanted to give them hope कि भाई you can still beat us. You नहीं, can still पाकिस्तान के dream तो of beating us. अगर और कंट्रोवर्सी ऐड करनी है तो पाकिस्तान के तो सारे स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए गेम्स, मतलब चेन्नई में हाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ताकि उनके स्पिनर्स चल जाएं, और साउथ हाँ अफ्रीका के उसके अगेंस्ट क्या नाम है उसमें, विच गेम विच वाज धर्मशाला, नहीं मैंने भूल गया, चेन्नई। तो साउथ अफ्रीका कैन हैव टेम्पर व्हाट्स इट कॉल्ड, महाराज एंड शमसी प्ले वेल इन दैट डे। तो हाँ। पाकिस्तान के भी बड़ा सोच के रखे हुए हैं सारे अगेन गेम्स। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हाँ नॉट नथिंग लाइक एग्जैक्टली। हम लोग ये वी आर नॉट, भाई पीछे मत पड़ जाना बीसीसीआई कल को पता हमारे। लगा चैनल ही खत्म हो गया एक पॉडकास्ट की वजह से। But yeah, I think the World Cup is just hotting up now, and everything's gonna be interesting to watch, and unexpected fixtures, unexpected तो भाई चलो जो भी रिजल्ट्स होने वाले हैं एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता है टॉप 4 कौन है। मे बी द फर्स्ट टीम इज अ बिट इनडिसाइसिव राइट नाउ, बट टॉप 3 तो एटलीस्ट पता ही है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अब ऑर्डर पता करने की बात है, एंड we're what halfway, more than halfway through the tournament, so soon enough we'll find out, and then eventually the last few games will just be practice games for most of the teams to just complete the tournament. So I would kind of see India probably play with a B, not a B team, but have a few switches around. Let a few other guys have an opportunity to play, especially against Netherlands, who's the last game, and maybe South Africa if it comes down to it as well. So it'll be interesting to think about those as well. Anything you want to add on before we kind of end the podcast, Suyash? No, I think in our World Cup predictions video, we did say that it will be a very competitive World Cup, and it is already a very competitive World Cup, given that the two teams that have surely been eliminated now are Bangladesh and England. They are not Afghanistan and Netherlands, who are associate nations. Exactly. So it is indeed a very competitive World Cup. First time as an associate nation has kind of beaten two proper test playing nations. And I think कुछ चल रहा था, we still need to research, but England के लिए कुछ problems हो गई ऑटो क्वालिफिकेशन के लिए for the Champions Trophy, समथिंग कुछ Hmm. चल रहा था। वो Again, वो not एक not simple उसका explanation basically is that the top 8 teams of the World Cup qualify to the Champions Trophy, which are split into 2 groups. But because top 7 actually qualify, including Pakistan. Pakistan, because they're in the top 7, it automatically goes to the top 8, which means Netherlands are included in this as well, as the table stands as of today. और उसमें ये होगा कि फिर England और Bangladesh will be the 2 teams who won't play that tournament, which is incredible to think कि भाई ऐसा time आ गया where Afghanistan and Netherlands might be playing. And the only reason Pakistan qualify automatically is because of it being hosted in Pakistan. So yeah, you kind of lose out on Bangladesh and England. And I think those are 2 big teams. Unless they wrap around and by 3 games, ho sakta hai, maybe it goes back to normal and England get a few wins on the trot. But Afghanistan, that Netherlands will might be the be 2 teams. huge. That will be huge, man. Like England is Uh, the father of cricket, and it will be the first time ever कि वो कोई कोई मेरे ऐसा दोस्त ने competition अच्छा नहीं लिखा था। खेलेंगे। मेरे दोस्त ने कहा we finally oppressed the oppressors. Absolutely, We've man. colonized the colonizers वाला सीन वाला था भाई। Colonize, absolutely true, true. मतलब गेम बनाओ और फिर उसके बाद सभी ने खेल दिया और हम ही लोग 10th आ गए। वही वाला सीन हो गया उनका तो। एंड मैं हम ही मैं बाहर हो वही गए, शॉकिंग, हाँ। मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार इनकी टीम में सिर्फ एक चेंज आया है, ओवेन मॉर्गन गया है और जॉस बटलर कैप्टन बना है। उसके अलावा इफ यू लुक एट द टीम्स बिटवीन 2019 एंड इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। एक जेसन रॉय और आई थिंक जोफ्रा आर्चर आर द 2 others that are missing, but other than that
pretty much standard across the board. And no team has been exactly the same more than I guess इंग्लैंड में ही सिर्फ एक ऐसे हैं जिसमें फायर पावर वही रही है. जॉस बटलर, बेयरस्टो, स्टोक, डेविड मलान as well, he was in that tournament, and आदिल राशिद, मोइन अली. So I think इंग्लैंड में भाई पूरी तरह से कंडीशंस को वॉश अप किया हुआ है. दे हैवंट अंडरस्टूड एनी. कोई ग्राउंड ले लो, कुछ भी ले लो, वो पता नहीं कैसे वाला एक गेम जीत गए वो जो जीतते थे. आई थिंक अगर वो रीमैच करा जाए तो आई थिंक वो भी बांग्लादेश जीत ही जाएंगे एंड में जाके. नहीं, बांग्लादेश तो यार वो अलग ही चल रहे हैं, वो नेदरलैंड से भी हार गए अब तो मतलब क्या ही बोले. खैर, इन एनी केस आई थिंक देयर विल बी सम वेरी बिग डिसीजंस कमिंग आउट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम Yeah. इंग्लैंड बोर्ड, एंड आई डोंट थिंक दे विल टेक दिस परफॉर्मेंस वेल. आई थिंक द फैंस आर वेरी इमोशनल इंग्लैंड के, एंड वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था यार कि दे प्रायोरिटाइज T20 एंड काइंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एंड उतना ये ओडीआई खेलते ही नहीं है. तो अभी दे आर कम्प्लीटली एक्सपोज्ड कमिंग डायरेक्टली इनटू द वर्ल्ड कप विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप. यार आज अगर तुम कहो, मतलब हमने कितने 6 बोल्ड मारे आज, एंड हमने रूट को बोल्ड मार दिया, हमने मतलब मलान, इतने बड़े बड़े नाम है यार ये, मतलब बेयरस्टो, मलान, रूट, बटलर. मजाक चल रहा है यार ये, मतलब 40 पे 4 कर देना इनका, मतलब गजब है. मतलब भाई भाई मेरा तो प्रेडिक्शन वीडियो में सेकंड बेस्ट टीम इंग्लैंड थी, मतलब अब तो क्या बोले लास्ट हो गई है. तो वेरी वेरी मतलब क्या किया यार इंग्लैंड तुमने, जब हम मतलब लोग रिकॉर्ड वाई. कर रहे थे हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग जब देखेंगे उसको या फिर से रिविजिट करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, ये हम लोग सोच हाँ रहे होंगे भाई. कि भाई इंग्लैंड लास्ट आई है. Yeah, I think it's a good idea. Let's make a reaction video on our prediction. एग्जैक्टली. बढ़िया. इंग्लैंड के लिए भाई अच्छा टेस्ट आने वाला है. उसके बाद भी जो वर्ल्ड कप के बाद they've got the tour of India. दिसंबर में they've got 3 T20s and then a test series and then ODIs and then after that another T20 series as well. तो sorry, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच है एक और इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच. But we've got 3 20s against England and then Australia come for 3 ODIs and 3 T20s. So a lot of cricketing season still yet to come right after the World Cup. But उससे पहले celebration भी थोड़ी बनती है वर्ल्ड कप की जब जीत जाएंगे hopefully India by the end of this. Thank you very much, Suyash, once again. Thank you guys for tuning in, watching the podcast. Make sure you listen to this on an audio platform as well. Add us to your playlist. It really helps us a lot. Follow us on Spotify. Subscribe to us on YouTube. Follow us on all of our social media pages on Instagram, Twitter, TikTok. Bhai, sab jagah kar lo for the latest clips, for the latest news, and for the latest edits on cricket as well. Make sure you guys hit the 20 likes on this episode, guys, and we hit another 1K on this, and I'll be very happy with that. We'll do a giveaway if India win the World Cup and I get like 10K on the podcast combined throughout every podcast we've done to the during the World Cup. I'll do an Indian jersey or whatever fan you are jersey for you guys giveaway on that. Let's do that. So make sure you guys hit the target. Once again, thank you guys for watching, and we'll see you guys next time. And then stay safe.